Welcome back once again to our online classes. After completing the most interesting chapter, Bipin Bapu's Labs of Memory, today we are going to start a new poem, that is The Last Bargain. Now, before starting the poem, let me introduce you to the poet, that is Rabindranath Tagore, and I think everybody knows this famous poet. He was well known for his writings and poems. Okay, now this last bargain is also among one of them. So let's start the poem first. Bargain. Now, what do you mean by the word bargain? Okay, bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. It means one does something for the other and the other one pays for it, or he does the something for the first person. Okay, for example, someone is looking for work, waiting to be hired. Okay, now here it is bargaining means suppose you go to buy something and when you pay for that thing he will give something to you. आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे या सपोज किसी पर्सन को आप हायर करते हो किसी काम के लिए और बदले में आप उसको पे करते हो, so that is called as bargaining. Now here the poem is about that person. Okay, someone who is looking for work. Looking means he is searching some work. वो कुछ काम ढूंढ रहा है, ठीक है, और ही इज़ वेटिंग टू बी हायर्ड, और कोई उसको हायर करे. जैसे हम मज़दूर होते हैं उनको हम हायर करके लाते हैं काम करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टू बी. सो ही इज़ वेटिंग टू बी हायर्ड. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन मतलब उसको कुछ काम मिलता है लेकिन उसकी नज़रों में वो काम वर्थलेस यानी इनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर. दो बार दूसरी बार तीसरी बार 2 बार और उसको काम मिलता है बट ही डोंट लाइक देम इधर, यानी वो दोनों भी उसको अच्छे नहीं लगते. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. इट मीन्स एट लास्ट in the poem when the speaker that person is hired for nothing, यानी उसको इसलिए हायर किया जाता है कि उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है. तो he is happy as never before. Now what is the bargain and why is it the best? So we are going to see in this poem that what was that last bargain and why it is the best bargain for that person. Okay, so let's move further. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Now, when this person, you could see here, this person who is looking for something, someone to hire him, here it is. So he once walking through the road in the morning, while in the morning he was walking on the road, somebody said he was saying to the people कि some come and hire me, यानी कोई तो मुझे हायर करे, ठीक है, यानी मुझे कुछ काम दे. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्टोन पेव्ड यानी बिल्कुल पथरीले, वहाँ पर बहुत सारे स्टोन थे, प्लेन रोड नहीं होना. स्टोन पेव्ड रोड. एट दैट टाइम sword in the hand, the king came in his chariot. Chariot is a vehicle which is used by the kings in those days, not today, but it is now used for only idols of you could see जगन्नाथ रथ यात्रा, वो chariot पे निकालते हैं उसको, है ना, रथ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, that is called as chariot. तो when he was walking through that stone paved road, what he saw, a king came and the king was having sword in his hand. He held my hand and said, I will hire you with my power. तो उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी पावर को जताते हुए किंग ने उसको कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा मेरी पावर से. I have so much of power that I could hire you. It means the king want to hire that person for his power, to use his power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Naught means useless. Counted for naught मतलब unimportant, कोई use नहीं होना.
तो when that person saw that king was hiring him with his power for to use his power, ठीक है, तो ही सेड दैट दिस पावर इज़ यूजलेस, यानी हमारे पास जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो टेम्प्ररी होती है, हमेशा नहीं रहती, isn't, whether it is physical power, though it's power of money, whatever. So these things are temporary in our life. और ऐसी टेम्प्ररी थिंग्स को वो हायर नहीं करना चाहता था. So what happened? He went away in his chariot. Means the king went away in his chariot. After saying no to the king, this man, the speaker, he moves further. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. Means when he was walking through the road, the day was quite warm, बहुत गर्मी थी. The houses stood with shut doors, यानी सब अपने अपने घरों में बंद थे. I wandered. Wandered means to roam, यानी इधर उधर घूमना. Along the crooked lane. Crooked यानी टेढ़े मेढ़े, not proper, bent. I wandered along the crooked lane. Lane means road. An old man came out with his bag of gold. So when he was walking through that crooked lane, he saw an old man and he was having a bag of gold with him. He pondered and said, I will hire you with my money. Ponder means actually to think, ठीक है, deeply. And so he said, I will hire you with my money. मैं तुमको मेरे पैसों से hire करूँगा. He weighed his coins one by one, but I turned away. Means he weighed his coins one by one. He was trying to show that he was having a lot of gold coins. ठीक है. But I turned away means, but the speaker left from there. He don't want to get hired by this old man. Why now he don't want to get? Because here this old man was showing him the power of money. Okay, and the speaker thinks that money is also a temporary thing which could not remain forever with us. टेम्पररी थिंग मतलब पैसा ऐसी चीज़ है जिससे आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हो, नाइदर मेंटल पीस नॉर हैप्पीनेस. सो ही वॉज नॉट रेडी टू बी गेट हायर्ड बाय दिस ओल्ड मैन with the help which he was doing with the money. So he weighed his coins one by one, but I turned away. So he even rejected, he declined to accept the proposal of being hired by that old man. Now further he moved. It was evening. शाम हो गई. The garden hedge was all aflower. Now when he moved, it was evening. What he saw, a garden. Hedge was all aflower. Hedge means here bushes. Okay, bushes यानी झाड़ियाँ. तो यहाँ पर bushes किसकी थी? फ्लावर. बहुत सारे फ्लावर्स थे, फूलों का झुंड था, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था. और तभी the fair maid came out, a beautiful lady came out, and she said to him, I will hire you with a smile. मैं तुमको हायर करूँगी और बदले में क्या पे करूँगी? स्माइल. Okay. Her smile paled and melted into tears, and she went away back alone into the dark. Now here it means that when she told him that she will hire him with a smile, and what happened, the speaker thought that smile is also a temporary thing. Smile जो ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे चेहरे पे नहीं बनी रहती है. एक समय आता है जब स्माइल पेल्ड यानी हमारी मुस्कान भी कभी कभी फीकी पड़ जाती है. मेल्टेड इनटू टीयर्स यानी जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी है, तो वो आंसू में कन्वर्ट हो जाती है. यानी हम इस वर्ल्डली हैप्पीनेस में, इस दुनिया की चकाचौंध में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो टेम्पररी खुशी होती है उससे हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम रियल फैक्ट भूल जाते हैं कि जो भी ये लाइफ में हम देख रहे हैं ये सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं. एंड शी वेंट अलोन इन टू द डार्क. सो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल ऑफ बींग हायर्ड. सो he said he declined her proposal, and so she went away into the dark. यानी उसने उसका भी प्रपोजल ठुकरा दिया. And that lady went away. At last
The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. Glistened means it is the past tense of shine. It means glistened here means shone, मतलब शाइन करना, चमकना. तो the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. Waywardly means प्रॉपरली नहीं, ऑर्डर में नहीं रहना. तो आपने देखा होगा लहरें कभी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आती है, इज़न्ट. तो वो वहाँ पर पहुँचता है. ऑन द बीच ही सॉ अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स. सो ही सॉ अ चाइल्ड, ही वॉज प्लेइंग विथ शेल्स. शेल्स यू नो ना, शंख जो होता है बीच पे. तो ही वॉज प्लेइंग विथ शेल्स. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग. तो उसने अपने, ही रेज्ड हिज हेड, सिर ऊंचा उठाया और ऐसे बिहेव किया जैसे वो उसको जानता हो, स्पीकर को. और उसने उससे कहा आई हायर यू विद नथिंग, यानी मैं तुमको हायर करता हूँ, ठीक है, और बदले में मैं तुमको कुछ भी पे नहीं करूँगा. इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग हियर. फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. और यही बार्गेन उसको समझ में आ जाती है, उसको एक्सेप्ट कर देता है वो, और इससे वो हमेशा के लिए फ्री हो जाता है. इट मेक्स हिम अ फ्री मैन. सो हियर द पोएट वॉन्ट टू से, द स्पीकर वॉन्ट टू से डैट नथिंग हियर मीन्स, अगर आप लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, ठीक है, तो आप हमेशा खुश रहोगे. आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आपके काम के बदले में आपको पे किया जाए, पावर दी जाए, पैसा दिया जाए, ब्यूटी, हैप्पीनेस. सो दिस ऑल थिंग्स आर टेम्पररी इन अ लाइफ एंड दिस थिंग्स नेवर गिव्स यू हैप्पीनेस. एंड इफ़ यू एक्सेप्ट नथिंग, या आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो लोगों से, तो आप हमेशा खुश रहोगे. यू विल बी अ फ्री मैन. सो दिस इज़ द लास्ट बार्गेन ही एक्सेप्टेड. एंड वॉट वॉज द लास्ट बार्गेन? डैट ही was hired for nothing. By whom? By a child. Okay, so really this is a really beautiful poem having a very nice moral. Okay, very हम जिसको कह सकते हैं एक मोटिवेशनल मॉरल है, जिसको हम सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए. ओके, थैंक यू.